Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं और प्रमुख आर्थिक खबरों पर भी नजर हम डालते हैं। आज दिन शनिवार का है। आज के दिन श्रोता चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन लाइंस के जरिए। आपके कोई सवाल हो इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, आप जरूर हमसे पूछें। 3 टेलीफोन लाइंस हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 717 106। तीनों नंबर दिल्ली के। इनके पहले 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं। सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। And now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Japan, South Korea and Vietnam at the G7 summit in Hiroshima, Japan. RBI decides to withdraw 2,000 rupees denomination banknotes from circulation, sets deposit and or exchange timeline until September 30, 2023. And all 3 major US stock indices ends the session moderately in the red. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान, कोरिया और वियतनाम के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के करेंसी नोटों को परिचालन से हटाने का फैसला किया। 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा किए जा सकते हैं अथवा बदले जा सकते हैं। और अमेरिकी शेयर बाजारों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर श्री मोदी की अगवानी की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। श्री मोदी अगले महीने की 21 तारीख से 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका भी जा रहे हैं। G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने हिरोशिमा में बोधि पौधा लगाए जाने के लिए श्री किशिदा को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने इस वर्ष मार्च में यह पौधा उपहार स्वरूप दिया था। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान मित्रता को प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी और श्री किशिदा ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। उन्होंने समसामयिक क्षेत्रीय घटनाक्रम और हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर विमर्श किया। दोनों नेताओं ने आपसी सामरिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। वार्ता में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ग्रीन हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, आतंकवाद से मुकाबले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे शामिल थे।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता भी बहुत सार्थक रही। दोनों नेताओं ने विकास के प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाए जाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर विनिर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। श्री मोदी और श्री योल ने G20 की भारत की अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया हिंद प्रशांत रणनीति पर भी बातचीत की। साथ ही श्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण, ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। इस तरह जापान की श्री मोदी की यात्रा बहुत सफल रही है। और अब हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश चलते हैं, कौन है? GS Batra from Delhi. A warm welcome. Please go ahead and ask your question, please. Yeah, my name is GS Batra, speaking from Delhi. My question is that जो गवर्नमेंट ने नया सिस्टम बनाया है कि आप 30 लाख रुपीस सीनियर सिटीजन अकाउंट में जमा कर सकते हैं। जी आप 30 लाख रुपीस सीनियर सिटीजन अकाउंट में जमा कर सकते हैं जी। उसका पहले अकाउंट हो जिसमें 15 लाख जमा हो तो उसी अकाउंट में जमा होंगे या नया अकाउंट खोलना पड़ेगा? देखिए बत्रा साहब, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप उसी को टॉप अप कर सकते हैं, और अगर नहीं अकाउंट है तो आप नया भी खुलवा सकते हैं। तो ज्यादातर सीनियर सिटीजन ने इस सीनियर सिटीजन स्कीम का लाभ उठाया हुआ है, तो आप पहले वाले अकाउंट को ही जाके टॉप अप कर सकते हैं। नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक से संपर्क करिए, जहां भी आपने डिपॉजिट किया उसी को वो टॉप अप कर देंगे। जी। मोहनीश हमारे अगले कॉलर हैं मुंबई से। मोहनीश, स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कोहली जी। मैंने 15 दिन पहले आपसे REITs के बारे में सवाल पूछा था। उसके बाद आपने कहा थोड़ा रीड करने के लिए। मैंने रीड किया तो पता चला कि आखिर में वो तो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, सिवाय इस बात के कि वो डिविडेंड देना उनके लिए मैंडेटरी है जी। तो इसके अलावा उसमें मतलब REITs और नॉर्मल इक्विटी में कोई और अंतर है, या ज्यादा सेफ है REIT में इन्वेस्ट करना, या हम डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वो बेहतर रहेगा? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है मनीष। देखिए, दोनों का कैरेक्टर फर्क है, क्योंकि REIT जो होती है वो आपकी ट्रस्ट होती है, एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, जिसमें जितने भी निवेशक होते हैं वो एक तरह से उसके भागीदार बन जाते हैं। और कंपनी में भी ऐसे ही होता है, कंपनी में आप शेयर होल्डर होते हैं, ये ट्रस्ट होती है। मूलतः कैरेक्टर में फर्क है, पर एक निवेशक की दृष्टि से एक ही बात है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, इसमें भी डिविडेंड देना मैंडेटरी है, वहां पर डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता। इसलिए कुछ लोग इन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ज्यादा अच्छा, जो लोग रेगुलर रिटर्न चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमको आता रहे, क्योंकि कंपनी डिविडेंड आपको पता है स्किप भी कर सकती है, कम ज्यादा भी कर सकती है, पर REIT में थोड़ा सा ज्यादा रेगुलेटेड है मामला। तो इसलिए आप बैलेंस कर सकते हैं। मनीष, आपके सवाल का मैं बहुत स्पेसिफिक जवाब दूं तो मेरा ख्याल, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में रुचि है और जिस प्रकार भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू सरकार का कमिटमेंट है और जिस प्रकार से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसको देखते हुए बहुत अच्छा सेक्टर है लंबी अवधि के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप बैलेंस करके दोनों में थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी देख रहे हैं और साथ में आप REITs को भी देख रहे हैं, तो आप दोनों में आप स्प्रेड करिए। हमारे इन्वेस्टमेंट में जब हम रिकमेंड करते हैं तो एक कहावत होती है कि नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो उस दृष्टि से भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दोनों में स्प्रेड करके रखें, आपको दोनों का अलग अलग मजा आएगा और दोनों का अलग अलग किस्म से ग्रोथ होगी, दोनों का अलग अलग किस्म से डिविडेंड आएगा, तो आप दोनों साइड का मजा ले सकते हैं। स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट टू बोथ दी प्रोडक्ट्स। From Kolkata, we are joined in by Atanu Shah. Atanu, we welcome you. Good evening, sir. Good evening. Everybody. My question is World Economic Order. As per as World Economic Order, what do we expect from from United States, and how like country like India and other related countries resist this situation or bypass? Thank you, sir. Well, Rajesh, I couldn't properly comprehend this question. So he says World Economic Order with regard to America. What did Mr. Tanu mean? What word did he use? That is the first. This is like now the adjustment, the date adjustment, the printing. They are printing money
the adjustment date, and these types of. Mr. Shah, your question is not very clear. Can you rephrase quickly, please? Yeah, because this question is not clear. That is the matter of the printing. There is one problem is the printing money printing money on basis of to adjust the date, adjust the inflation. So this is the. So are you talking about printing being done to adjust inflation? Is that your question? Yes. Okay. All right. In fact, Mr. Saha, you will be surprised that during COVID, when United States of America was in the forefront on printing currency, they printed dollars, a lot of them, by the way. So they are struggling to curtail the inflation because in the flow of money, increases in an economy, it becomes more difficult to curtail the inflation. Whereas India, resisted that temptation and resisted that methodology, and India's inflation is now far more under control than America for that matter, although American inflation has also started coming down. But I think excessive printing of currency for any kind of adjustment is not very good as a matter of principle in economics. However, your question is not very, very specific and clear. Maybe you can rephrase the question next time and I can be a little more focused on what exactly what are you trying to connect. बिल्कुल एनआर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। बहुत बहुत स्वागत प्रसाद साहब, सवाल पूछें आप। Good evening, Market Mantra. Good evening. Mr. Kohli. There are two questions. Yeah. There are two questions. First question, Yeah. the withdrawal of rupees 2,000 rupees note by the RBI, how would it impact Indian stock market? Okay. My second question is, Supreme Court panel has found no regulatory failure or price manipulations by the company which was in question by the Hindenburg. Now, whether those company shares would revive in the coming days. Thank you. Mr. Prasad, answering your first question, the impact of, rupees 2,000 note is not a big deal for the economy because there's no shortage of cash in the economy. Normally, the economy gets affected when there is shortage of cash because there is enough remonetized currency in the economy. In fact, it's a matter of cycle where RBI, after 4 or 5 years, replaces the notes or withdraws it as a power under Section 26(2) of the RBI Act 1934 to withdraw any currency. So therefore, stock market, this is a very sensitive platform. So it does react sometimes in a very, very short term. So maybe or maybe not on Monday, you might see Indian stock market giving a little bit of reaction because some people are saying that the real estate market may be affected because there's a lot of cash which floats around in the real estate market and some of the other retail businesses where cash is prevalent. However, I really don't feel it will have any midterm or long-term effect. So there could be a knee-jerk reaction on Monday, but I cannot definitely tell you convincingly that there will be a reaction. Maybe the market might just ignore this because it's not a major development as far as this withdrawal of 2,000 rupee note is concerned. Supreme Court panel, yes. The committee formed by Supreme Court has submitted its report. The report basically says that there is nothing significant that they found in the regulatory failure. I think it's a bit early as far as the stocks are concerned. The stocks reacted that day. We don't talk of company-specific stocks here, Mr. Prasad, and we all know whom we are talking about. Therefore, I would not like to elaborate it. But all I would say is that maybe over a period of time when the SEBI report also comes by August, September, the clouds will clear and you will see a clear direction for this group. Yeah. We are joined in by Ravi Narayan from Bhilai now. A warm welcome. Thank you. Good evening, Market Mantra and Dr. Saab. Good evening. Actually, some months ago I had questioned, it was a dream actually कि हमारा जो Indian currency है वो उस पे जो है इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर इंडियन करेंसी पे जो है लोग इंटरनेशनली ट्रेड करने लगे जी। आपने भी बड़ा उसको अप्रिशिएट किया था और पॉजिटिवली एंड किया था अपने जवाब में। आज के कंटेक्स्ट में मैं इसलिए दोबारा उस बात को उठा रहा हूँ कि जापान ने जो है अपने यूपीआई में इंटरेस्ट शो किया है जी, तो कितने जल्दी ये ड्रीम जो है कम ट्रू हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। रवि जी, आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब मैं तो आपसे हर देशवासी चाहेगा जैसे आप चाहते हैं कि हमारा रूपी ग्लोबल हो जाए और भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। आप देख रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो वहां पर यूपीआई और भारत ने जो फिनटेक में जो तरक्की करी है उसको पूरी दुनिया इस समय देख रही है और एक एक करके कोई ना कोई देश कुछ दिनों में हमें दिखता है जो इसमें इंटरेस्ट दिखाता है।
जापान उसमें लेटेस्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को जिस स्पीड से हम लोगों ने डेवलप किया है उसको पूरी दुनिया अपनाना चाहेगी और ज्यादा से ज्यादा देश इसमें शामिल होना चाहेंगे। और अभी रुपए का अंतर्राष्ट्रीय होना, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम उस ओर अग्रसर हैं। ऐसा नहीं है कि अभी रुपया अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, क्योंकि थोड़ी रुपये रूबल में जैसे ट्रेड हो रहा था उसमें वॉस्ट्रो अकाउंट्स में करेंसी एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये शुरू में टीडिंग ट्रबल्स हैं। जब भी कोई चीज ग्लोबल होती है तो आपको उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे जैसे इन समस्याओं का समाधान निकलता जाएगा और जैसे जैसे भारतीय ट्रेड बढ़ेगा, जितना हमारा ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा रुपए को मान्यता मिलती जाएगी। तो आपका सपना बहुत दूर नहीं लगता है मुझे। मैं तो यही कहूंगा जल्द से जल्द पूरा हो। कोई मैं इसमें समय सीमा तो नहीं डाल सकता, पर आप इस सपने को बनाए रखें और इस सपने की चर्चा करते रहें और आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो यही कह सकता हूं रवि जी। जी जय सलूजा हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आपका स्वागत है। सवाल पूछ लें आप सलूजा जी। Good evening to Kohli ji and the entire market team. Good evening, Saluja sir. Since a lot of complicated questions are going on, I thought I should ask you a simple question. Your view on the market, the fact that the inflation has come down in USA, so should we put our money aggressively or should we stagger it for 1-2 months? Thank you, sir. Mr. Saluja, that's a very, very pertinent question, because you see there are a couple of problems which the American markets are right now struggling with. One of them is the debt ceiling. You know, there's a lot of uncertainty, although this has happened many times in the past, but the Congress has to approve the debt ceiling. I think the American president is also struggling hard. He's making all out efforts to see that there is no default and all the financial obligations are met on time. So I think that is one problem they are struggling with, and I hope the matter should be resolved amicably. And there's going to be no default there, which can shake not just the American markets, but the markets around the world. The second problem they are struggling with is because we're getting mixed reactions on the interest rate hikes in the next Fed meeting. Although the inflation has come down, there is no doubt. But some of the state Fed chairpersons, the state Fed heads, they have still expressed that I think there is a lot more to be done on the interest rate, and is still beyond their tolerance level. We should not forget that American economy, inflation, remains close to zero or maybe a little above zero. So I think for them to have even this kind of inflation is not tolerable. So I think these are the two uncertainties which the market is struggling from, and that's where most of the markets take cues. Otherwise, as far as the Indian markets are concerned, fundamentally we are very strong. Some of the company results we are getting of major industries, they are very, very healthy. The bottom lines have improved, the revenues have improved. There are, international or global headwinds that we are facing, and we will have to play to the tune of the world market to a certain extent. So therefore, there is a bit of uncertainty. I think what you should do, Mr. Saluja, is if you're planning to invest, you should invest in the form of an SIP. When I say SIP, I need not necessarily mean a mutual fund SIP. SIP is a method of investment. Thoda karke. Maybe you can invest every 15 days, every time the market falls. So likewise, you're going to average out your investment in the next 2 to 3 months. So you can do it in a staggered manner, Mr. Saluja. Little bit, if you suppose you have to invest 1 lakh, you can maybe do 10,000 or 15,000 at one shot and spread it across 6 or 10 installments. And you'll end up getting a good bargain at multiple prices, and you'll average out a very good cost price. Yeah. Prashant joins us now from Mumbai. A warm welcome, Prashant. Good evening, all of you, sir. Ji, good evening. My question is related to this employee provident fund. Now, as per the new guidelines, I'm confused. It is 2.5 lakh के ऊपर टैक्स लगेगा कंट्रीब्यूशन के ऊपर या 2.5 lakh इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा? Earlier it was 2.5 lakhs on the interest. Now people say annual contribution of more than 2.5 lakhs will attract interest. नहीं प्रशांत जी, इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। उसके ऊपर जो आपको ब्याज आता है 2.5 लाख से ज्यादा, उस पर वो अब एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अभी तक पीएफ का ब्याज आपको पता होगा पूरी तरह से माफ था, पर क्योंकि जो बड़े सैलरी अर्नर्स हैं जिनका बड़ी मात्रा में कटता है, तो उनके लिए सरकार को लगा कि वो लोग दे सकते हैं टैक्स, उनकी कैपेसिटी प्रोपेंसिटी टू पे ज्यादा है, तो इसलिए उनके ऊपर लगाया हुआ 2.5 लाख इंटरेस्ट पे लगेगा। ऐसे कंट्रीब्यूशन पे सीधा टैक्स नहीं लगता है जी। आर.एस. दहिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दहिया साहब, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। अपना सवाल पूछ लें। कोहली साहब नमस्कार। नमस्कार दहिया साहब, और मार्केट मंत्रा टीम को भी नमस्कार। I got 3 questions. Can I ask all 3? No, just stick to 2. 2, okay. The first question is, the fund manager is being paid
fee out of expense charges being charged from the investors, but there is no platform where investors can ask him for his poor performance. What can be done about it? This is one question. Second question is, I request Kohli Sahab to write a letter to Ministry of Education to put a subject which gives education about gift tax and custom duty, transaction tax, and something about legal issues like what is affidavit. Okay, Mr. Dahiya, we've got your question. I think when a student is studying commerce, I think, Sharad, they should be studying all these issues as well. Oh, yes. Rajesh, these are, because this is a very specialized, maybe for Mr. Dahiya, he needs these things on an everyday basis, so he feels this should be introduced as a general subject. But however, there is specialization in commerce, and when you have a major in legal subjects, you are educated in relevant subjects. So obviously, we can't discuss all the university subjects here, but there is education on this. And your first question, Mr. Dahiya, I think you've asked this question a few times earlier also. As I said, I mean, the performance of the funds is not related to the expense ratio that they have. I mean, there's no correlation between the two. You have bad and good performances from fund. Not all funds are always bad in their performance. Otherwise, the fund will not survive. It will not be able to, collect money from the investors. So therefore, this is a mixed bag always. No fund always does bad. No fund always does good as well. But I think there is no way that SEBI or any other authority can link probably expense ratio in terms of performance. That will be a bit unfair to the fund. You asked this question, Mr. Dahiya, before also, so I would reiterate what I have said earlier as well. Yes. P.K. Banerjee from Delhi joins us now. A warm welcome, Mr. Banerjee. Please ask your question. जी नमस्कार. नमस्कार जी. कोहली जी नमस्कार. नमस्कार. दो तीन छोटी-छोटी जिज्ञासा सवाल होती हैं. जी. मैं जैसे कि ये 2000 का नोट बंद होने के कारण क्या काला धन क्या दोबारा से वापस निकलने के विचार है सरकार का. दूसरा सवाल ये है, पोस्ट ऑफिस में अगर हम कुछ काम कराने जाते हैं, वहाँ अगर उनकी शिकायत किसको करनी पड़ेगी, कहाँ इसका ऐसा डिपार्टमेंट है. तीसरा सवाल ये है, यूक्रेन रूस का जो युद्ध लड़ाई चल रही है, ये किस पॉइंट पे लड़ाई हुई, अभी तक क्यों नहीं बंद हो पाई. चलिए बैनर्जी साहब, जो आपका 2000 रुपए का, देखिए 2000 रुपए की होर्डिंग हो रही थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. पीछे भी बहुत सारे केसेस सुनने में आए, आप देखते होंगे इमेजेस उसकी सब सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां कुछ अधिकारी कभी कहीं इलेक्शन में कहीं हमें कैश के स्टैक्स दिखाई देते थे, बहुत बड़ा कैश का ढेर जो पकड़ा जा रहा है. तो ये तो बात स्पष्ट हो गई थी कि 2000 के नोट का प्रयोग कैश को गलत अवैध तरीके से स्टोर करने के लिए किया जा रहा है. तो मुझे लग रहा है बिल्कुल, जब आप 2000 रुपए आपको जमा कराने हैं, या तो आप बैंक में जमा करा दीजिए, और अगर वो अवैध तरीके से कमाया गया है तो उसको बैंक में जमा कराने में तो दिक्कत आएगी. और 10 से ज्यादा उसकी लिमिट रखी गई है, आप 10 से ज्यादा बदल नहीं सकते हैं. तो अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है तो वो कैसे बदलेगा. बिल्कुल ये काला धन निकालने में सहायता करेगा. क्लीन मनी, मैं तो क्लीन मनी फिजिकल नहीं, मैं तो क्लीन मनी दूसरे तरीके से ही बोलता हूँ, ये सिस्टम को क्लेंस करेगा. हालांकि ये कदम 4-5 साल की नोट की साइकिल होती है, उसके अंतर्गत किया गया है. आपका मैं 2 ही सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि 3 का नहीं दूंगा, और भी कॉलर्स होते हैं. यूक्रेन रशिया का युद्ध देखिए क्यों शुरू हुआ था, और पहले यूक्रेन रशिया का हिस्सा होता था, उनके जो राष्ट्रपति उन्होंने कहा वापस हमारा होना चाहिए वगैरह वगैरह. वो खैर जियोपॉलिटिकल रीजन है. कब समाप्त होगा ये तो आप और हम, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा आज ही समाप्त हो जाए. हम क्यों चाहेंगे कि खिंचे, जिससे दुनिया भर को नुकसान हो रहा है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है इसकी वजह से. तो जितना लंबा खिंचेगा हमारे हित में नहीं रहेगा. अब ये तो किसी, मुझे लग रहा है बैनर्जी साहब, किसी ज्योतिषी से पूछना पड़ेगा कि कब समाप्त होगा. हम और आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द समाप्त हो. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं. आज भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है, उन्होंने एश्योरेंस दी है. तो पूरी कोशिश की जा रही है. अब तो कोशिश ही की जा सकती है, बाकी तो 2 देशों के बीच की बात है. तो जब जल्दी से जल्द, जाहिर सी बात है. शरद हमारे साथ कभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि लगातार वो 2000 रुपए के नोटों को लेकर बात हो रही है, तो उससे संबंधित और डिटेल क्या है हम एक बार देख लेते हैं. जी. इस सवाल के बाद कवि फ्रॉम वडोदरा इज विद अस. कवि, वी वेलकम यू. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. I'm Kavi calling from Vadodara, sir. Yes, please go ahead and ask your query, please. So actually, my question is about income tax regulations, sir. Sarab Kohli sir is very famous in answering this question, so I would like to have this question. Suppose, sir, some of the person deposits, for example, 10-15 lakhs rupees cash in the bank account, which is worth of, you can say, profit, principal come profit of selling of paddy.
some of the farmers doing business, and if that money is deposited into the bank, around 10-15 lakhs rupees in the bank. So will the bank charge income tax in this, sir? Since it is a agricultural income, so are we necessary to pay tax? Because it is 10 lakhs rupees. That is first question, sir. Okay. Please go ahead and ask. I got your question. Kavi ji, dekhiye, first of all, bank never charges income tax. You know, you're depositing, as you know, if a deposit of more than 10 lakhs rupees has been made in a bank, then there is a document called SFT, Statement of Financial Transaction, which bank files and informs income tax that so-and-so account holder has deposited this cash. So you can get a notice from income tax asking as to why have you deposited, where is this cash coming from. However, since it is agricultural income and you are engaged in agriculture, and if it is exempt under the rules of agricultural income, you know, there are geographical ceilings on how far you are from the main town for considering the income as agriculture. But if it is agricultural income in principle, there's going to be no tax. All you need to do is to answer that notice saying that this is agricultural income, hence you deposited cash. So that's all. No bank is going to charge you tax. No worries, Mr. Kavi. Yeah. Moving on, the Reserve Bank of India has decided to withdraw rupees 2,000 denomination banknotes from circulation. RBI has said members of the public may deposit rupees 2,000 banknotes into their bank accounts or exchange them into banknotes of other denominations at any bank branch. The rupees 2,000 notes, however, will continue to be a legal tender. In a statement released on Friday, the central bank stated that in pursuance of the clean note policy of the Reserve Bank of India, it has been decided to withdraw the rupees 2,000 denomination banknotes from circulation. The central bank added that in order to ensure operational convenience and to avoid disruption of regular activities of bank branches, exchange of rupees 2,000 banknotes into banknotes of other denominations can be made up to a limit of rupees 20,000 at a time at any bank starting from May 23, 2023. The RBI has added that in order to complete the exercise in a time-bound manner and to provide adequate time to the members of public, all banks shall provide deposit and or exchange facility until September 30, 2023. Also, the U.S. stocks closed the trading week on a soft note on Friday as early gains dissipated after U.S. debt ceiling negotiations in Washington were paused, denting optimism a deal could be reached in coming days to dodge a default. All the three major U.S. stock indices ended the session in red. They all notched gains for the week, which was marked by solid economic data and the tail end of a better-than-expected earnings season. The Dow Jones Industrial Average fell 109 points or 0.3% to end at 33,427. The S&P 500 dropped 6 points or 0.1% to close at 4,192, and the Nasdaq Composite lost 31 points or 0.2% to 12,658. और आज के एक आखिरी कॉलर हैं आरपी उपाध्याय. अब जल्दी से सवाल पूछ लें उपाध्याय जी, समय कम है. हाँ, नमस्कार साहब. कौन सा नमस्कार. नमस्कार उपाध्याय साहब. कौन सा मेरा एक छोटा सा सवाल है. एक विडो है मेड, उसको लिंक है, विधवा पेंशन मिलती थी उसको, बिहार से है वो जी. वो आधार कार्ड भी लिंक है, पैन कार्ड भी लिंक है, लेकिन वो लाइफ सर्टिफिकेट वो नहीं कर पा रही है. तो मैं भी सीनियर सिटीजन, मेरे से जानकारी क्या करना चाहिए. समय कम है, जल्दी से आप बता दें कोहली साहब. मुझे लग रहा है, देखिए उनके सिस्टम में प्रॉब्लम होगी. अगर उनको सर्टिफिकेट लगाना है अपडेट करने के लिए, वो लगाएं, उनसे अधिकारियों से संपर्क करें. बाकी इसको अगले आप जब अगला एपिसोड होगा उसमें लीजिएगा तो हम इसको थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप जो अधिकारियों से संपर्क करिए, बैंक के अधिकारियों से संपर्क करें. वक्त बहुत कम है जी. Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Japan, South Korea and Vietnam at the G7 summit in Hiroshima, Japan. RBI decides to withdraw 2,000 rupees denomination banknotes from circulation, set deposit and or exchange timeline until September 30, 2023. And all three major U.S. stock indices close
in the red. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.